Hello everyone, welcome to Vigyan Bharat. In this video, today I'm going to discuss two important properties based on absolute value function or modulus function. I'm going to discuss their proofs, and there's an important problem which again requires the knowledge of modulus function, and at the last there's some special case of it. So just a quick information if you are new to our channel, that we have a good community of people at a Telegram group, also at our Facebook page. So do join those groups, that Telegram group. That will be going to helpful if you are either preparing for some examination, or if you even do the problems which we share every day. So that will going to help you in raising the fundamentals of the subject. You can find its link in the about section. So just, and one more information, that watch the video till the end to get a better clarity. So without any delay, let's get started. So let's first read the statement of the given problem, that we are given two real numbers a and b, and we have to prove the following two results. The first result is that the maximum of this set comprising of two elements a and b, जो ये दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे a और b, तो इनमें जो इनका मैक्सिमम है वो कैसे डिफाइंड है? हाफ ऑफ their sum a plus b plus their absolute difference, basically the difference between two, but we are writing in terms of the modulus. So let's go ahead. And the second is, if we want to find the minimum between these two, then it is given by this particular expression. So इनको प्रूव करते हैं, देखते हैं फटाफट से कि हम यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कैसे हम इसमें सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम को, अगर हमें जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है अगर हमें उसकी नॉलेज है, तो इट्स वेरी इजी नाउ. So let's begin. I'm going to discuss 3 and its special case later. So let's try to see here. But I have drawn here this line segment joining A and B. तो यहाँ पे जो बीच में पॉइंट है ये वाला सेंटर में, जस्ट ये एग्जैक्टली क्या है? a plus b by 2. What this represent is the mid point. ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पता है कि अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का मिड पॉइंट हम कैसे निकाल सकें, उनका सम करके एवरेज, सिंपली एवरेज वी आर टेकिंग. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट है. नाउ in this here in this pink expression, I have asked a question to you that you should answer. आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर ट्राई करें इसको करने का. आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा. तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा है कि इसके अंदर कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ द मॉडुलस फंक्शन. ए और बी कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, दो रियल नंबर्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? अगर आप इसको मॉडुलस में लिखोगे तो a माइनस बी एंड उसका मॉडुलस. यहाँ पे तो हमें, मैंने जिस हिसाब से इसको ड्रॉ किया है, इसमें क्लियरली विजिबल है कि मैं a लाइज ऑन दी लेफ्ट ऑफ b, दैट इज a is less than b. But in general, if I don't have any information who is bigger, so I can directly find its distance. Simply take the difference and find its absolute. तो यहाँ पे ये जो मॉडुलस के अंदर एक क्वांटिटी है, ये क्या है? But it represent this one, the distance between the points a and b. Now if you again come over to this picture, because if you are able to understand this picture, then the proof is very simple, then nothing is left in the proof. So why I am emphasizing again, try to see here. Now in this violet or indigo color which I have just marked it in this curly line, so ये distance क्या है? अगर आप इसको देखें, ये पूरा distance a से b तक का distance, तो ये quantity है modulus of a minus b. तो ये कितना होगा? उसका exactly half, because this point lies in the center of a and b, this mid point. तो ये वाला क्या होगा? ये distance कितना होगा? which lies on the right half of the midpoint is this quantity. Now
from this line segment, it's quite clear that if I ask you the minimum between, now I ask you question, very simple question over here. Minimum of A and B. तो आप यहाँ से देख के मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर लाइन सेगमेंट पे जो भी रियल लाइन का एक पार्ट है सपोज उस पे ए और बी रियल नंबर्स है हमारे, मैंने उसको एक पार्ट लिया यहाँ पे, तो उसमें जो ए और बी है उसका मिनिमम क्या होगा, विच लाइज ऑन द लेफ्ट, सो इट्स सर्टेनली ए, एंड यहाँ से इसका मैक्सिमम क्या होगा, इट्स बी, बिकॉज इट्स लाइड ऑन द राइट, सो इट्स ग्रेटर। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, इसको हम उस फॉर्मूले की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो ए से यहां तक ए और बीच के बीच का जो डिस्टेंस है, जो बीच का पॉइंट है, ये a प्लस बी बाई टू क्या है एग्जैक्टली, दिस क्वांटिटी विच लाइज ओवर इन द मिड पॉइंट, और इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि हाफ द डिस्टेंस है, एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है, हाफ फ्रॉम हेयर टू हेयर, ऑल्सो दिस वे। Just let me correct, I made a mistake. This is the midpoint. Forget what I said earlier. This is the midpoint that I know. जैसे A पॉइंट है, B पॉइंट है, ऐसे ही अगर इस पॉइंट को मैं एक C बोल दूं तो C की वैल्यू क्या है, A प्लस बी बाई टू, ये एक पॉइंट है यहाँ पे जो इसके मिड सेंटर में लाई कर रहा है। अब अगर इस पॉइंट के जो आधा डिस्टेंस है, अगर इसमें से मैं आधा डिस्टेंस ऐड कर दूं इस पॉइंट में, जो ये मिड पॉइंट है, ये इसमें अगर मैं कितना डिस्टेंस ऐड करना चाह रहा हूं, ये राइट हाफ, तो मैं कहां पे, जब मैंने इतना डिस्टेंस ऐड कर दिया तो अब मैं यहां पे कहां पे हूं, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो बी पॉइंट क्या था, मेरा मैक्सिमम था, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। Similarly, you can easily now find what will be the minimum. It's quite clear now. If you subtract this half, this distance on the right half is same as the distance on the left. Let me just write it here over this one. यहाँ से लेके जो यहाँ तक का distance है, this is simply again this distance, modulus of a minus b by 2. Now, if you subtract this distance from this point, just a second, yeah, so what you're going to get is subtract this one, so यहाँ पे आप लेफ्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और वो क्या है यहाँ पे हमारे केस में इसका मिनिमम। इसको अब ये हमने जो फॉर्मूला है इसको मैंने एक बड़ा ही इनफॉर्मल वे से प्रूव किया है। आई वांट यू टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर एंड यू कैन इजीली प्रोसीड। बट माय आइडिया वाज टू गिव यू द हिंट। we can verify these formulas for any two a and b. Suppose let choose my a to be suppose say -1 and b suppose say 2, then I know the max of a and b, which is the maximum of -1, 2। तो यहाँ पे इनमें मैक्स क्या है, 2 है, मेरे को दिख रहा है। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में रखूँ इसी वैल्यूज को, I want to use this quantity over on the right. So for using that, I will simply substitute the values of, इसको मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में a की जगह रखेंगे -1, b की जगह 2 प्लस -1 and b की जगह 2. Yes, so let's try to simplify this now. Half, this will be 1 plus this will be -3, but in absolute result will be 3. So 3 plus 1 is 4 by 2, that is 2. The answer is, again, you can verify from this formula. Now one more, just a quick, I would say, corollary to these results I would like to add, that these holds even for, because see, the a and b are what, they are real numbers.
So if I take two functions f and g, f comma g, from suppose say any set S, both these functions are defined from S to R, where again this S is some non-empty subset of R. Assume that S क्या है, कोई non-empty subset है R का. तो जो यहाँ पे f और g हमारे दो फंक्शंस हैं, ये जो वैल्यूज अज्यूम करेंगे fx, gx, ये दोनों वैल्यूज क्या है, रियल नंबर्स हैं. ये क्या होंगी, आर रियल नंबर्स. तो जो हमने ऊपर अभी फॉर्मूला पढ़ा है a और b के लिए, उसको मैं f और g के टर्म्स में लिख सकता हूँ कि अगर कोई दो फंक्शंस हैं तो उनकी वैल्यूज का भी मैं मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकता हूँ इजीली. Simply replace everywhere a by fx and b by gx in those formula. I just write the maximum for you. You can easily write the minimum. Sorry. Yes. fx plus gx mod of fx minus gx. यहाँ पे आप इसको इजीली कर लेंगे. सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, इसमें a को fx से रिप्लेस किया है और b को gx से रिप्लेस किया है. अगेन इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ दैट जो हमने ऊपर ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, मिड पॉइंट एंड देयर द डिफरेंस बिटवीन दोज टू, हाफ ऑफ द डिस्टेंस. सो इसको हमने मैक्सिमम को फॉर्मूले पे एक्सप्रेस कर दिया. सो इट्स नाउ वेरी सिंपल. नाउ जो मिनिमम वाला है उसको भी आप इजीली सिमिलर लाइंस पे कर सकते हो. नाउ लेट्स गो again back to the problem which I gave to you today, this problem number 3 over here. So what this problem says, that A is the collection of all those x which are coming from the set of real numbers. That is, we have to find all those real numbers which satisfy this particular condition where this A and this B are fixed. ये आपको पहले से ही पता है, ऊपर आपने गिवन इंफॉर्मेशन था कि a and b are two real numbers given to you. So now you're interested to find all those values of x which satisfy this condition. If I ask you again to pause the video and think geometrically, what I'm asking you to think this problem geometrically, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, तो आपको आंसर हो सकता है विदाउट सॉल्व करे ही मिल जाए. तो आप यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज देखो, रियल वैल्यूज देखो कि जिसका डिस्टेंस ए से भी पॉइंट से बराबर है और बी से भी पॉइंट से बराबर है. सो आई अगेन this line segment is a hint for you and the answer is hidden inside this, so you even don't need to solve, you can find it. Drop what is the answer in the comment box. And similarly the special case, अगर a और b दोनों सेम हो जाएं तो फिर a और b जब दोनों ही सेम हो जाएंगे तो उस केस में आपको फाइंड करना है कि वो सारी कौन सी वैल्यूज हैं x की जो इस पे थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है उस पर होल्ड कर रहे हैं, तो आपको वो फाइंड करना है. तो ड्रॉप मी द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम थर्ड एज वेल एज दिस स्पेशल केस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ए जो सेट है आपका क्या होगा दोनों केसेस में. आई वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड. एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो, feel free to drop in the comment section on what topics you would like, what topics you want me to make further videos, or if any like your requirements regarding some courses or anything. If you're preparing for some examination, then feel free to drop in the comment box. And if you find this video to be useful and interesting, then please do like it and do share about our initiative among your friends. And thank you so much, and join the Telegram group, and we'll meet again in a similar video. So thank you so much.